Hello and welcome. Welcome to the daily Nifty and Bank Nifty analysis with MJ. Friends, आज है 15th December and we'll be estimating the probable moves, resistance and support levels, buying and selling zones along with a trading plan for Nifty and Bank Nifty for the next trading day on 16th December. Well, if you are new to our YouTube channel, friends, first subscribe to this channel and don't forget to press the bell icon such that whenever we upload any new video, you get notification on it. And of course, be generous to share the video with your friends and trading community. As you can see, we have put a lot of efforts here to create these videos for our trading community, and we want our trading community to be updated and abreast of all technical and fundamental analysis. So here you could see technical analysis, video on technical analysis or fundamental analysis or data analysis. And I'm sure these videos will enhance not only your knowledge, but they will also serve other trading members. Right now, let's look at today's market, friends. Right, so Nifty and Bank Nifty today, you see that they started gap down, and in the morning we saw a pure bearish bias. Right, the market, global markets were down, and as I said in my last video for today's analysis, today's estimation, right, that at lower levels, somewhere around 13,400, 450, or even 13,500, you will be seeing buying emerging. And similarly, in a Bank Nifty, also at 30,200 or 30,354 or 55 के level पे आपको buying नजर आएगी. So that's what precisely happened today. Overall, आज market की breadth neutral रही, friends. What best happened today is, although market corrected a lot, but buying emerged at lower levels. Overall, अगर आप आज के contributor देखेंगे तो बजाज फिनसर्व, बजाज फिनांस, आयशा मोटर, JW Steel, and Shree Cements were the top gainers. And the top losers, they Hindi Unilever, Nestle, BPCL, ICICI, and Axis Bank. Both the banks were down. So, अगर हम आज निफ्टी की टोटल रेंज देखें तो इट वाज मोर और लेस विद इन द डिफाइंड रेंज और एस्टिमेटेड रेंज फॉर टुडे, जो कि 13,400 से 13,650 की थी. आज का जो ओवरऑल गेन है, फ्रेंड्स, निफ्टी में it's a 10 points gain, and Nifty has closed at 13,568, while as Bank Nifty today lost somewhere around 55 points and it closed at 30,691. So overall ऐसा कोई बड़ा लॉस नहीं है मार्केट में आज. अगर ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से देखें तो निफ्टी ने लोअर लो बनाया एंड लोअर हाई, एंड सो डिड द बैंक निफ्टी, राइट. एंड कैंडलस्टिक के पर्सपेक्टिव से देखें तो निफ्टी हैज मेड अ हैंगिंग मैन काइंड ऑफ पैटर्न एंड बैंक निफ्टी हैज मोर ऑफ ड्रैगन फ्लाई डोजी, राइट. सो जनरली अगर एट एक्सट्रीम हाइज पे या डिस्ट्रीब्यूशन जोन में हैंगिंग मैन पैटर्न बनता है तो फ्रेंड्स इट इज कॉल्ड अ बियरिश पैटर्न. It's in fact a confirmation of pattern trend reversal. However, we need to see the next day whether the confirmation comes or not. अगर कल selling होती है or any kind of bearish pattern is created tomorrow, then it may be a reversal. But as you might be seeing, many a times even on first December, the similar kind of pattern was there, but it was completely defied. Not only that, even 23rd November को भी यही pattern बना था. But more or less जो technical patterns हैं, वो as of now Nifty is or Bank Nifty is literally just ignoring them, or I'm saying that it's basically even defying the law of gravity right now, just the kind of steep up move which is happening in Nifty and Bank Nifty, right? हालांकि पिछले 4 दिन से आप देख सकते हो डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बने हैं, तो कंसोलिडेशन के फेज में है. बट ओवरऑल जिस हिसाब से FIIs का पैसा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है इंडिया में, उस हिसाब से ये सारे रूल्स को, टेक्निकल एनालिसिस के काफी रूल को तोड़ के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आगे बढ़. So let's see for tomorrow whether we get any confirmation of reversal. Otherwise, the up journey will keep on going. Now, अगर हम price action perspective से देखें, friends, on a lower side, 13,537 is our first level of support, which is today's opening price for Nifty, and 13,500 second level of support. Third level is 13,448, and 13,400 is our fourth level of support in Nifty.
राइट. सिमिलरली अगर हम रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें फ्रेंड्स, सो लेट मी जॉट डाउन कि 13,400 हमारा लोअर लेवल है, और अगर हम अपसाइड में देखें तो 13,597 जो कि आज का हाई है, दैट विल बी सॉरी कल का हाई है, दैट विल बी आर फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस. सेकंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस 13,650, थर्ड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है 13,690. So this seems to be the trading range for Nifty for tomorrow. Similarly, Bank Nifty के लिए देखते हैं. On a lower side in Bank Nifty, you might see the support emerging at 30,515 and 30,354 and 30,202. So this is on a lower side. और अगर Bank Nifty अपर साइड में जाती है तो 30,746 पहला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है जो कि हमारा कल का क्लोजिंग है, और 30,846 इज अ सेकेंड लेवल ऑफ resistance which is yesterday's high. Third level will be emerging at 31,085 and fourth level at 31,282, right? So let me jot it down. I think it's not working properly now. Give me a minute. Right. So you can jot it down. 31,282 on the upper side is the level for Bank Nifty. Of course, at the end of the session, we'll be seeing what kind of what kind of scenario is emerging, looking at the data as well, so that we can plan or our trading activity for tomorrow, right? So let's at this point of time look at data point. निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं. निफ्टी के ऑप्शन चेन में वी लुकिंग एट द the option weekly option chain which will expire on 17 December, and 13,567-68 का आज का लेवल है, तो 13,500 को हम एटीएम कंसीडर करेंगे फ्रेंड्स. सो 13,500 अगर हम 13,550 को हम एटीएम कंसीडर करेंगे, और इसके आसपास में देखेंगे कि किस टाइप की पोजीशन बुल्स एंड बियर्स ने बनाई है. तो 13,550 पे a good support level has emerged here. You can see that almost 8,76,000 contracts हैं यहाँ पे overall open interest. Not only that, 13,600 पे भी almost 8.44 lakh contracts हैं. So अगर prices के ऊपर जाती तो definitely that will also become a good support level. But 13,500 is emerging as a second level of support, जहां पे कि आपको आज फ्रेश 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं, एंड 13,450 विल इमर्ज एज अ सपोर्ट लेवल 3 बिकॉज यहाँ पे भी 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट आए, ओवरऑल 1.1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट है. एंड 13,400 पे फ्रेंड्स अगेन 9.5 lakh contracts and overall 2.8 million contracts. So that will act as a support for. But we can see that max open interest for this option chain series is at 13,500. So lower side में अगर हम यहाँ पे देखें तो 13,500, अगर ये 13,500 टूटेगा तो 13,400, शायद 13,500 को मार्केट रेस्पेक्ट करे कल, राइट? सिमिलरली अगर हम बियरिश साइड में देखें, मतलब जो बियर्स की एक्टिविटीज हैं, सो व्हाट वे दे हैव बीन एक्टिव टुडे. सो अगर आप देखेंगे तो 13,500 पे फ्रेंड्स 2 लाख फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए, तो और 2.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एज वेल एज 13,550 पे दे बीन एक्टिव, ऑल्दो फ्रेश राइटिंग 51,000 कॉन्ट्रैक्ट, बट ओवरऑल 1.5 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पे. सो देयर आर बियर्स इन द मार्केट व्हिच आर थिंकिंग ऑफ दैट market may go below 13,500, but that's their way of looking out. But हम जब resistance level ढूंढते हैं friends, so we look in the out of money. So out of money में 13,600 is emerging as area or a strike price of maximum open interest, right? So that seems to be our resistance and very strong resistance, right? अगर ये level टूटता है तो then 650, 13,650, that also has almost 1.3 lakh contract, 1.3 million contracts, and ये level टूटता है तो then you have got 13,700 का level, right? So that also has got good number of open interest. So
सो अगर हम अपर साइड में देखते हैं तो 13,600 and in case if that is broken 13,700 हमको ये एक रेंज नजर आ रही प्राइस एक्शन से सॉरी फ्रॉम द ऑप्शन चेन। इसका पीसीआर देखें फ्रेंड्स तो इट इज 1.03 टुडे, सो न्यूट्रल बायस है, बट रेंज थोड़ा स्कैटर्ड है। दैट मीन्स द बुल्स एंड बियर्स आर नॉट डिसाइसिव कि किस लेवल तक मार्केट को पुल किया जा सकता है, राइट? पुल डाउन किया जा सकता है या पुल अप किया जा सकता है, बट दैट्स हाउ इट इज शोइंग। सो नाउ फ्रॉम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव, इफ यू लुक, इट वाज 13,400 डाउनसाइड एंड 13,690 अपसाइड। That seems to be valid. Similarly, बैंक निफ्टी में भी वैसे ही है, लोअर साइड थोड़ा लिमिटेड लग रही है। ऑप्शन चेन का जो पीसीआर है फॉर दिस सीरीज इज 0.74, सो ऑप्शन चेन जो रेंज बता रही है 30,500 टू 31,000 की, सो नैरो हो गई है वो, राइट? आज का प्रोविजनल डेटा देखें फ्रेंड्स तो FIIs वर अगेन टुडे आल्सो नेट बायर विद 2,484 करोड़ रुपीस इन कैश मार्केट इन इक्विटीज, while as the DIIs were again a seller today. 2,667 करोड़ की सेल आउट की उन्होंने। और ओवरऑल अगर हम दिसंबर की बात करें तो DIIs have sold almost 23,000 crore worth equities, while as FIIs were net buyer with 31,675 crore के आसपास का उन्होंने बाइंग किया हुआ है। That's what is driving the liquidity provided by FIIs is providing our market up right now. राइट अगर RSI की बात करें फ्रेंड्स, आज RSI 77.5 है, जो कि कल के कंपैरिजन में 0.5 पॉइंट्स बड़ा है। इंडिया विक्स आज मोर और लेस सेम रही, 0.3% डाउन हुई, and the markets are still in overbought zone in daily as well as on weekly chart, so you need to be careful. Market may give you surprise. In fact, अगर आप लास्ट 3 दिन की लोअर वीक देखेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, तो मार्केट इज ट्राइंग टू गिव यू अ सरप्राइज। इट्स ओनली FII money that is supporting buying at a lower level, right? So trading range के perspective से देखेंगे, so now let's look at the smaller time frames and find out where are buying opportunities or where are selling opportunities in Nifty and Bank Nifty in intraday trade. So friends, 13,537 से 13,000 1 minute, there seems to be a range missing here, 13,577 तक की यहाँ पे आप अवॉइड करें ट्रेड करना। दिस कुड बी अ वोलेटाइल जोन। अगर यहाँ पे मार्केट स्टार्ट होती है, लेट्स से फ्लैट स्टार्ट होता है, तो once the ORC is broken, opening range candle is broken, then you can take your position accordingly. What has already been discussed many times, ORC upside में break होती है with the volume and your trading strategy, go ahead with, then 13,600 could be your target. So इसमें risk and reward ratio बहुत अच्छा नहीं बनेगा, so I would personally avoid such a trade. 13,600 के ऊपर मार्केट क्लोज होती है for time being, let's say half an hour or 25 minutes के लिए, तो then you can trade on a long side. That could fetch you around 50 to 90 points on the upper side, as the trading range has already been defined as 13,650 and 13,690 की, right? Now अगर ORC down side में टूटती friends, then you should trade on lower side, and again 13,537 के नीचे ही लोअर साइड में ट्रेड करें, एंड आपको 35 to 40 पॉइंट के आसपास में डाउन साइड में मिलेगा, क्योंकि 13,500 पे आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, एज वेल एज यहाँ पे एक प्राइस एक्शन का भी सपोर्ट लेवल है, जो कि काफी टाइम इसने रेस्पेक्ट किया वो लेवल को। नाउ अगर ये लेवल टूटता है, देन अगेन 13,550, मतलब 550 पॉइंट डाउन साइड में आपको और ट्रेड करने को यहाँ पे मिल सकती है। बट अगर सडनली मार्केट बहुत गैप डाउन स्टार्ट होती है, तो यू विल सी बाइंग इंटरेस्ट इमर्जिंग, सो यू कैन गो लॉन्ग। एंड अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में 13,650 या 700 पे ओपन होती है, देन यू वुड सी DIIs विल बी प्रॉफिट बुकिंग, सो प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। सो गैप अगर 50-60-100 पॉइंट ऊपर मार्केट स्टार्ट होती है, तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के ज्यादा चांसेस हैं। नाउ लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी फ्रेंड्स, हाउ यू कैन ट्रेड बैंक निफ्टी टुमारो। बैंक निफ्टी में भी मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो, जब भी गैप अप स्टार्ट होती है, यू कैन सी अर्ली मॉर्निंग में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती है यहाँ पे, राइट? सो कल भी हमने ये बात की थी कि अगर ये रेंज में ये वाली जो रेंज थी, इसमें मार्केट ओपन होगी तो अवॉइड करें। ORC टूटा डाउन साइड में, शॉर्टिंग वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी। सो कल के लिए क्या कर सकते हैं? कल के लिए 30,515 से
750 के आसपास में ये ट्रेड, ये रेंज को अवॉइड करें। मतलब प्री बायस, जब मैं बोलता हूँ अवॉइड करें तो प्री बायस होके न जाए मार्केट में, ओआरसी को टूटने दें। जिस साइड में भी ओआरसी टूटती है विद राइजिंग वॉल्यूम, यू कैन इनिशिएट अ ट्रेड विद अ स्टॉप लॉस। नाउ अगर मार्केट 30,850 या 30,900 पे ओपन होती है तो देन यू माइट सी सम प्रॉफिट बुकिंग और द रेंज बाउंड वोलेटाइल मूव, राइट। एंड अगर गैप डाउन स्टार्ट होती है 30,300 और 400 के आसपास में, then you would see buying interest developing, so you can initiate your long position. As of now, अगर हम international marketing के cues की बात करें तो you can see that Nasdaq today. Let me open the Nasdaq chart, right? So Nasdaq में bullishness है. That means most of the US tech companies are trying to go rise upside, right? तो बट अभी यहाँ पे अपसाइड बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये लेवल पे जैसे ही 12,700 के आसपास में Nasdaq पहुंचता है, you could see that there is a selling pressure, right? And selling pressure is much bigger than the buying pressure. एक सिंगल कैंडल जो कि 9th को बनी थी, 9 दिसंबर को, वो 4 ट्रेडिंग सेशन में भी कवर अप नहीं हुई है। सो ओवरऑल कंसोलिडेशन का ही माहौल वहां पे भी है, राइट। S&P 500 में देखेंगे फ्रेंड्स, तो S&P 500 इज ऑल्सो शोइंग अ सिमिलर काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। 4 ट्रेडिंग सेशन में जो करेक्शन हुआ है, आज थोड़ा उसमें एक बाइंग दिखाई दे रही है और इसमें भी अ शॉर्ट कवरिंग एज वेल। तो ये भी एक आपको सिनेरियो याद रखना चाहिए, राइट। तो ओवरऑल बुलिश ट्रेंड नहीं बन रहा है पिछले एक हफ्ते में यूएस मार्केट में एज वेल। तो ना अगर आज डेक्स की और FTSE लंदन की बात करें तो डेक्स हैड बीन इन अ वेरी बुलिश मोड। इसने ये ट्रेंड लाइन व्हिच स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर अराउंड 10th नवंबर, वो अभी तक वो ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। आज यहाँ पे सपोर्ट लेके ये बुलिश है, राइट। तो कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पे भी। सिमिलरली इन FTSE कंसोलिडेशन के ही फेज में है, बट थोड़ा करेक्शन हो रहा है हायर लेवल पे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो रही है, राइट। सो ओवरऑल ऐसा इंटरनेशनली मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है, यू कैन सी दैट पार्ट हियर। सो अगर इंटरनेशनल मार्केट में कंसोलिडेशन हो रहा है तो दैट ऑल्सो लीड्स कंसोलिडेशन इन आवर मार्केट, बिकॉज ऐसा कोई खास इंफॉर्मेशन या न्यूज नहीं है जो कि हमारे मार्केट को एकदम एक्सट्रीमली बुलिश ड्राइव कर पाएगी अभी, राइट। सो ओवरबॉट जोन में मार्केट है तो करेक्शन इज वेरी नेचुरल। कल के लिए जो ट्रेडिंग रेंज है 13,400 से 13,690 की, मतलब जो हमने रेंज की पिछली बार बात की थी, आज के लिए वही कल के लिए भी रेंज दिखाई दे रही है फ्रेंड्स यहाँ पे। और बैंक निफ्टी में जो रेंज है 30,200 से 31,200 की रेंज दिखाई दे रही है, राइट। बैंक निफ्टी में थोड़ा सेलिंग प्रेशर ज्यादा दिखाई दे रहा है। देयर वाज अ न्यूज ऑफ फ्रॉड इन एक्सिस बैंक दैट हैज प्लेड somewhat a bearish role for Bank Nifty today, although I was expecting it to be playing heavily, but 1.5 to quarter to 2% करीब down था सुबह Axis Bank, but it recovered, right? So keep on watching that kind of information, which sometimes drive the indices in a different direction, right? So if you are trading intraday, friends, do look at option chain data, because that tells you about the fresh मोमेंटम, बुलिश और बियरिश। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक हो तो स्टॉक के जो ओपन इंटरेस्ट है उनके ऊपर भी नजर रखें। इंडिया विक्स USD INR विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेज द momentum of market, so उसके ऊपर नजर रखना ना भूलें। Thank you very much for watching our videos and liking the videos. Do subscribe to our channel, friends, and don't forget to press the bell icon. And apart from that, be generous to share the videos with your trading communities and friends who can be equally benefited from quality knowledge. Signing off until the next video. Do write your comments in our videos, friends, if you like them. If you are getting knowledge or if you are getting support, do write that. That gives us encouragement. See you in the next video. Good luck, happy trading, happy investing.